Jai Sri Ram, Dr. Adithyanjee, welcome to Bharat Marg. Thank you for joining us. दोस्तों आज हम गहरी बात करने वाले हैं ये है अमेरिका क्या पीएम मोदी को पोजीशन से निकालना चाहती है, पीएम मोदी को नहीं चाहती है कि वो पीएम रहें, यही सवाल है। डस अमेरिका वांट टू गेट रिड ऑफ पीएम मोदी? ओके, ये सवाल है। हम डॉक्टर आदित्य जी से पूछेंगे। एंड रशियन प्रेसिडेंट पुतिन शोज मिरर टू अमेरिका। ओके, इसके बारे में भी बातचीत होगा। मगर फ्रेंड्स, बिफोर गोइंग फर्दर, अगर अभी तक आप नहीं किए तो प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब अवर चैनल भारत मार्ग एंड आल्सो press the notification bell to get connected, and also like the video, comment on the video, share the video. अगर कोई सवाल है तो पूछिएगा, और हम बहुत सारा सर्विस देते हैं, जैसा संस्कृत सिखाते हैं, और ये फ्री है टोटली। एनीबडी कैन लर्न बिकॉज विदाउट संस्कृत एंड संस्कृति there is no Bharat. Okay, and also we do lot of good things we are on another day. You may be seeing, if you like what we are doing, make sure to support us by sharing the video, by contributing, and thank you very much. Okay, Dr. Adithyanjee, thank you. Welcome again to Bharat Marg. Thank you very much indeed for inviting me again on Bharat Marg. It's always a pleasure and talk to you. You know, you are like ever-ready battery. I saw your schedule today. It's like mind-blowing, going. Thank you for what you are doing. That's you are doing tirelessly for the community. Appreciate it. And Dr. Adithyanjee, this is the thing. ये क्या पूरा घोटाला गुट बनाया है क्या वेस्टर्न का, ये जो यूएस का नेतृत्व में पीएम मोदी के निकालने के लिए इलेक्शन में इंटरफेयर हो रहा बोल के पुतिन बोल रहे हैं। इसके बारे में आपका राय क्या है? ये थोड़ी जटिल समस्या है। ये एक बात तो पक्की है कि जब भी भारत में आम चुनाव होते हैं तो बाहरी राष्ट्रों के उसमें कुछ हस्तक्षेप होता है। इसमें कोई दो बातें नहीं है। और पहले से होता आ रहा है, हर चुनाव में होता है। और ऐसी बात नहीं कि सिर्फ चुनाव के समय में होता है, बीच में भी होता है। पश्चिमी देशों की जो गुप्तचर संस्थाएं हैं उनका काफी हस्तक्षेप रहा है भारत में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि और जो राष्ट्र हैं उनका हस्तक्षेप नहीं रहा। पहले जमाने में जिसको सोवियत यूनियन बोलते थे, जो अब नहीं रहा है, उनका भी हस्तक्षेप रहा था। एक मित्रों आर्काइव्स हैं, वो एक केजीबी के गुप्तचर थे, उन्होंने वो पुस्तक लिखी थी और उसमें उन्होंने लिखा था कि केजीबी भारत में 2 राजनीतिक दलों को पैसा देती थी। बट कमिंग टू द पॉइंट टुडे, ये लोग क्या चाहते हैं? मोदी को निकालना चाहते हैं क्या? देखिए, ऐसी बात है कि अगर भारत में कोई भी शीर्ष नेतृत्व पे भारत के लिए उन्नति कर रहा है, पश्चिमी देशों को यह पसंद नहीं है। तो इसमें कोई दो बातें नहीं है। भारत के आंतरिक मामलों में कनाडा ने भी इंटरफियर किया है, यूके ने भी इंटर किया है, अमेरिका ने भी इंटरफियर किया है। तो बहुत जगह से हस्तक्षेप हो रहा है। और ये जो रूस और अमेरिका में झगड़ा चल रहा है, ये जो वक्तव्य दिए जा रहे हैं एक दूसरे के विरुद्ध, उसमें भी हमें देखना चाहिए कि क्या चल रहा है।
बट आदित्य जी, उसमें हमें बलि का बकरा नहीं बनना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। बट डॉक्टर आदित्य जी, मेरा सवाल इसलिए मैं पुतिन जो बोल रहे हैं उससे मैं सहमति हूं कि ये अरविंद केजरीवाल अंदर जाने के लेके ये लोग बताते हैं, ये म्युनिसिपालिटी का जो चेयरमैन रहा, देखिए और इधर ट्रंप को वो लोग ऐसा दिक्कत देते हैं कि वो जाके बाहर कैंपेनिंग नहीं कर पाएगा। देखिए भारत का जो विदेश मंत्रालय है, हम्म, उसने साफ साफ कहा है कि यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन फॉर इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम ये भारत के चुनावों में हस्तक्षेप कर रहा है। उन्होंने जो अभी रिपोर्ट निकाली है उसमें 16 राष्ट्रों को कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न का फतवा दिया गया है और उसमें भारत का नाम भी है। तो भारत का जो विदेश मंत्रालय है उसने साफ साफ कहा है कि ये नहीं चलेगा, आप इस तरह की बातें नहीं कर सकते जबकि हमारा चुनाव चल रहा है। और अगर आप देखें तो आप जिसको अमेरिका कहते हैं ना, उसमें बहुत ही लोग हैं, बहुत ही जिसको बोलते हैं प्लेयर्स हैं। ये एक संस्था नहीं है। एक मैंने जैसे यूएससीआईआरएफ बोला है, फिर ये जो पश्चिमी मीडिया है, पश्चिमी प्रेस है, वो अपनी ऊटपटांग खबरें छापते हैं या कुछ ऐसी रिपोर्ट्स लिखते हैं जो सत्य पे आधारित नहीं है। चाहे वो न्यूयॉर्क टाइम हो, चाहे वो वॉशिंगटन पोस्ट हो। अभी अभी उन्होंने लिखा है कि भारत में लोकतंत्र की कमी हो रही है। फिर यहाँ के जो थिंक टैंक्स हैं और यहाँ के कुछ एनजीओज हैं, जॉर्ज सोरोस की ओपन सोर्स सोसाइटी, फोर्ड फाउंडेशन, रॉकफेलर फाउंडेशन, इन लोगों ने कुछ राजनीतिक दलों को, कुछ एनजीओज को चंदा दिया है। वो किस लिए जाता है, ये भी सोचने की बात है। तो हस्तक्षेप तो हो रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन भारत के चुनावों में सिर्फ एक जगह से हस्तक्षेप नहीं है। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि ठीक है, हमें सजग रहना है, जागरूक रहना है भारत में, और किसी तरफ से भी हस्तक्षेप नहीं टॉलरेट करना है। अब कुछ ऐसी भी रिपोर्ट्स आई हैं कि चीन भी भारत में एक हस्तक्षेप कर रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को प्रयोग करके। चीन ने ताइवान के इलेक्शंस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा चुनाव में हस्तक्षेप करने की प्रयास किया था, और माइक्रोसॉफ्ट ने कहा है कि चीन भारत के चुनावों में हस्तक्षेप करने का प्रयास कर रहा है। तो ये जो रूस और अमेरिका का झगड़ा चल रहा है, उसमें बयानबाजी हो रही है कि पुतिन महोदय ने कुछ वक्तव्य दिया और अमेरिका ने अगले दिन उस वक्तव्य को खारिज किया। ये इनकी अपनी प्रॉब्लम्स चल रही हैं एक दूसरे की, और जो पुतिन ने कहा है उसमें कुछ तथ्य भी है। ये बात नहीं कि उसमें कोई तथ्य नहीं है, लेकिन मैं ये बताना चाहूंगा कि भारत एक सक्षम राष्ट्र है, और एक सक्षम राष्ट्र होने के नाते भारत को अपनी आंतरिक व्यवस्था ऐसी बनानी चाहिए कि ये जो गुप्तचर संस्थाएं हैं ये कुछ भी ना कर पाए। लेकिन हमेशा होता है, ऐसा होता है, और छोटे छोटे राष्ट्र भी इंटरफेयर करते हैं। अब आप पश्चिम एशिया के देशों को देखिए, कतर से भारत में हस्तक्षेप हो रहा है, पैसा जाता है। चुनावों में एक समुदाय विशेष के लिए पैसा जाता है कि वो जागरूक हों और जाके वोट डालें, उनके लिए भी पैसा दिया जाता है। सो इलेक्शन को जो इंटरफेरेंस हो रही है वो बहुत राष्ट्रों की तरफ से हो रही है, सिर्फ अमेरिका ही नहीं इन्वॉल्व है।
अमेरिका भी इन्वॉल्व है। और अमेरिका तो टेररिस्ट फंड उनको अपना दामाद बना के बिठाया गया है अंदर उधर। वो कनाडा का भी वही हालत है। ये कनाडा तो पता ही है, मगर ये सारे गोरे एक साथ हैं। पश्चिमी देश भारत को ऊपर आने नहीं देखना चाहते। मतलब ये ऐसा बात है कि अपना चमड़ी डिफरेंट है। देखिए, अंतर तो है। अब आप देख लीजिए कि जो अंतरराष्ट्रीय अवस्था है उसमें हम बाइपोलैरिटी से यूनिपोलैरिटी की तरफ गए, फिर यूनिपोलैरिटी से मल्टीपोलैरिटी तक की तरफ जा रहे हैं। और उसमें पश्चिमी देश आश्चर्यचकित हो गए हैं कि जिस राष्ट्र को उन्होंने हाशिए में डाल दिया था, जिसके लिए ये कह दिया था कि इसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, वो राष्ट्र अब उभर कर आ रहा है। उस राष्ट्र का एक अपना स्वर है, अपनी एक आवाज है, उसको वो दबा नहीं पा रहे हैं। पहले कर लेते थे, अब नहीं कर पा रहे हैं। तो प्रयास तो होंगे और प्रयास हो भी रहे हैं, लेकिन मेरा ये कहना है कि सिर्फ इस बात पे ध्यान केंद्रित करने के बजाय भारत की जो आंतरिक व्यवस्था है, गुप्तचर संस्थाएं हैं, उनको जागरूक रहना है कि जिस तरफ से भी हस्तक्षेप हो रहा है, चाहे वो अमेरिका है, चाहे वो चीन है, चाहे वो कनाडा है, चाहे वो ब्रिटेन है, चाहे वो पश्चिमी एशिया के अरब देश हैं, जो भारत के चुनावों में हस्तक्षेप कर रहे हैं, इन सभी पे कड़ी नजर रखी जाए। सिर्फ एक बात को लेके हम बात का बतंगड़ नहीं बना सकते। हमें सभी तरफ से जो हस्तक्षेप हो रहा है उस पर ध्यान देना चाहिए। एक्चुअली आई हैव अ क्वेश्चन हियर डॉक्टर आदित्यन जी, क्या इनको जलन है क्या? जैसा अभी देखिए पश्चिमी देश जिसको आप बोलते हैं, यूएस, कनाडा, ये जो यूरोप वगैरह का अगर आप लेते हैं तो यूएस का प्रेसिडेंट ऐसा है कि डायपर के बिना जा नहीं पाएगा, भूल जाता है क्या बोलता है क्या नहीं बोलता है। कनाडा का पीएम तो ऐसा पप्पू है कि उसका रेटिंग तो अप्रूवल रेटिंग इज बिलो 17% इन टीन्स। और यूके का प्राइम मिनिस्टर जो है ऋषि सुनक, वो कोई इलेक्शन जीत नहीं पाएगा। ऐसा दे हैव वीक लीडरशिप कंपेयर टू इंडिया। हाउ डू यू सी दिस प्लेइंग रोल? See, the geopolitical situation is changing very fast, and the countries that were holding the international power, slowly they will have to give that away. Our system was dominated by the victors of World War II, and then they had a fight amongst themselves. And during the Cold War, the Western imperialistic alliance basically worked against India. So there's no doubt about it. Even US ambassador to India, Eric Garcetti, has said that Indians have a lot of goodwill for Russia because Russia was there for Indians. It's not I am saying that, it is Eric Garcetti, the US ambassador to Russia, is saying that. And he says that yes, India did the right thing by purchasing the Russian oil when Russia was under sanctions on Ukraine war, because that arrangement suited United States. Because India was buying below the cap Russian oil, they did not want international oil market to be disrupted so much on the issue of sanctions, but they had a wink wink nod nod situation in which Russia was encouraged to sell oil to India at a discounted prices, and the same oil was refined by India, was purchased by European nations and United States. So sometimes things are much more complex than they look like, but there is no doubt
that Western imperialist alliance had tried to suppress India because they had their own favorites. Initially, it was Pakistan, then it became China. And at this point in time, the countries that are really surprised at India's rise are China, and if I may say, Japan. It is estimated at this point in time that India will surpass Japan as the fourth largest economy in nominal terms in 2025. So, a lot of countries that did not comprehend what was India's potential are in for a surprise. But I can tell you one thing, Russia knows India because they have worked with India, so they know Indian mindset. And in the past, Soviet Union may have had its agents in India, and they were, and they have written accounts in Metrokin archives, but they have been time-tested friends. And now the US establishment is realizing that they don't have that much of credibility with India. इनको कोई भी डॉक्टर साहब इनको कोई भी तो भरोसा नहीं कर सकते, इनका इजराइल भरोसा नहीं कर सकते जो इसका ही पुत्र है. Well, that is the problem. इनको कौन भरोसा कर सकता है? That, you know, if you look at the United States, they have this thing called doctrine of American exceptionalism. Basically, it gives you a carte blanche that whatever you do is right. They will justify it. You know the prisons in Abu Ghraib. Do you know what happened in Afghanistan? There were human rights violations in both Iraq and Afghanistan. They are now decrying that maybe Israel is committing human rights violation in Gaza. But did you forget what happened in Abu Ghraib or in Afghanistan? So United States has an over-exaggerated viewpoint about its own self and its own role. Yes, because we have been superpower, but gradually that power is shifting away. The power is moving eastward from west. And it's not just United States, it's all the Western nations that are very, very perturbed at this transition. But the world never stays static. Dr. Adithyanjee, I have a last question for you. Okay, you are in June 4th. Okay, assume you are in June 4th, and Modi ji, as he says, he is 400 पार कर दिए. ओके, तो ये इन लोगों का रिएक्शन क्या होगा? आपका मन में क्या आ रहा है? इसके बारे में जरा बताइए. Last thing. Well, they will be privately distressed, but publicly they will have to honor the verdict of the people and learn to live with the reality. Right now, there's a gray zone that people are hoping, and I'm not going to name people, but there are a lot of people who are hoping that maybe the outcome is something different. That's why the issue of exerting influence, sending money, making statements that India, there's a democracy deficit. Unfortunately, people in India are under the influence of these external forces to the extent that there is some issue about the Supreme Court that is trying to become a party to the elections. But क्या सुप्रीम कोर्ट डर गया है क्या? ये जो अमेरिका ने बोला कि अरविंद केजरीवाल को अंदर रख के डेमोक्रेसी खत्म हो रहा है, ये क्या सुप्रीम कोर्ट के लिए मैसेज था क्या? आप क्या सोचिए? It was definitely a dog whistle. Dog whistle, certainly. Yeah. It was a dog whistle. You know, within 3 months of the Chief Justice, who is educated in the United States, becoming Chief Justice, he was invited to Harvard for some prize. I mean, the guy has just become Chief Justice. He has not done anything and you are giving him an award. No. This is a way of engaging and... No. Here I don't agree with you. You know, Obama, just before becoming president, he got the Nobel Prize for Peace. So, 3 mahina bahut jata hai. It was the same story. It was the same story that the
powers that be about the Nobel Peace Prize, they wanted to reward Obama in contrast to George Bush, the son. So Obama had not done anything, he did not have any achievements. And I think the Nobel Peace Prize Committee might be regretting because Obama's tenure was equally violent. Extrajudicial exterminations, drone strikes. Uh, it was not an honorable record to deserve a Nobel Peace Prize. So the point I'm trying to make is that India is undergoing elections. There's interference from a lot of sources, including United States, including the Western media, including intelligence agencies. But that does not mean that China is not interfering. That does not mean that Middle Eastern countries are not interfering. Some of the, even the small countries, because they have a lot of petrodollars, even countries like Qatar, and they are sending money to India. They are contributing. Arvind Kejriwal got $16 million from Middle Eastern countries. It's an open secret. It has been written by a number of Aam Aadmi Party supporters. So, in a democratic elections, everyone wants to use the opportunity for their own benefit, especially the external forces. And all I'm saying is that India as a nation is very well prepared. And in the past, Indian electorate has disregarded what is the external influence. Absolutely. Dr. Sab, you deal with the Indian diaspora all around the world. Okay, I have a question for you. That is, what is the diaspora feeling? Do they think Modi will come? Who they want to bring in? Is the diaspora thinking like the U.S. leadership? Is there any difference in I think diaspora is divided, but majority of the diaspora realizes the importance of rise of India over the last 10 years and the current leadership of India. There will be some die-hard members of the diaspora who on either ideological grounds because they belong to communist or socialist factions or for Congress party or because of religious affiliation and religious affiliation related to two or three particular religions that probably will be wishing that the current government does not come back. Absolutely. And I'm not going to name those forces, but majority of the diaspora have a realization how much India's prestige has grown in the international arena under the current government. Bilkul. And they appreciate that. They also appreciate because they go and visit India, not all the time, maybe once a year or once in 2 years. So every time they visit, they see changes. Absolutely. If you're living there, the changes are there all the time, so you don't appreciate the changes. But if you're going infrequently, you start comparing with the past that last time I came there, this was not there. Now this is there. Absolutely. So diaspora is very appreciative of the current government, and diaspora is hoping that the government comes back on June 4th. So it will be a rude awakening for the forces that want the current dispensation to be defeated. But yes, they will work for it. Bilkul. Dr. Sab, thank you very much for joining us and pouring your heart out and answering all our questions. Thank you again and looking forward to seeing you again very soon in Bharat Marg. My pleasure, Sundar Bhai. It's always a pleasure to come and talk to you. But I generally don't like to give very straight answers. Absolutely, absolutely. Thank you very much. Okay. Jai Shri My Krishna, Jai Shri Ram. Friends, do comment on the video. What do you think?
of what Dr. Adithyanjee was saying. Do you agree, disagree? Comment, share, friends. Looking forward to seeing you in the next video. Till then, Jai